Hello and welcome to your English language class. Today in this class we'll be taking up the remaining part of the chapter Under the Fig Tree, written by Wangari Maathai. So now we've already read till page number 34. Okay, last para. So underneath the arrow roots there would be thousands of frogs' eggs. Now we've read that the author she used to go near the narrow stream, okay, and there used to be a lot of arrow roots, the plants which look like which when cooked used to be like potatoes. They were starchy like potatoes, okay, and they used to grow only where there was a lot of water, and she used to sit underneath one of the arrow roots, and there used to be a lot of frogs' eggs, okay, and they were like tiny black, brown and white beads. वो ऐसे लगते थे जैसे छोटे छोटे मन के होते हैं ना, जैसे the beads of a necklace. It used to look like that. I thought they would make a beautiful necklace, and the author used to feel that if I just put them in a bead, in a string, then it'll make a beautiful necklace. Now I would spend hours trying to pick them up as gently as I could, hoping that I could put them around my neck. अब वो जो ऑथर है वो उसको बड़े ही ध्यान से, धीरे से, एकदम वो जेली टाइप होते हैं, ओके, तो उनको बड़े ही आराम से जेंटली उनको उठाती है और कोशिश करती है जस्ट टू मेक अ नेकलेस आउट ऑफ देम. However, each time I placed my fingers below to lift them, the jelly that held them together would break and they would slip through my fingers back into the stream. I was so disappointed. Or whenever the author tries to pick them up, however gently she used to pick them up, but the jelly used to break, okay, and the eggs used to drop into the stream again, okay, and she used to feel all disappointed and dejected. Time and time again I would return to that stream to play with frogs' eggs, and she used to like to visit the stream, and she used to like to play with the frog's eggs. Maybe she liked the idea that she could make a beautiful necklace out of the frog's eggs. So sometimes the eggs would suddenly disappear. Soon after I would see an army of black tadpoles wriggling in the water. और वो जो एग्स थे वो डेवलप होके अब वो क्या बन जाते हैं, दे टर्न इनटू टैडपोल्स. ओके, आपने मे बी फ्रॉग की लाइफ साइकिल पढ़ी होगी, तो पहले एग्स होते हैं, फिर टैडपोल्स होते हैं, ठीक है, नहीं, पहले एग्स होते हैं, फिर लार्वा उनसे बनते हैं, फिर टैडपोल्स और फिर फ्रॉग्स, राइट. सो वो जब फिर बाद में जाती है, दोबारा विज़िट करती है, तो एग्स डिसअपियर हो जाते हैं, वहाँ दिखाई नहीं देते, और उसको क्या दिखाई देते हैं, छोटे छोटे टैडपोल्स उसको पानी में घूमते फिरते दिखाई देते हैं. दे वर ट्विस्टिंग एंड टर्निंग, ओके, एज इफ दे आर ट्राइंग टू एस्केप. बचते हुए नज़र आते हैं, जैसे बहुत स्पीड में इधर उधर फ्लोट कर रहे होते हैं वो, या स्विम कर रहे होते हैं. I would try to catch them by their tails, but then too they slipped away. Okay, so they were too quick to be caught by the author. They slipped away. In time, the tails also would disappear, and later on, I would see many frogs hopping around the area near the stream. Or in a few days, what happened? Their tails also disappear, and they develop into full-grown frogs. Okay, and they could be seen hopping around the area near the stream. I never made the connection between the eggs, the tadpoles and the frogs until I went to school and learned about the life cycle of frogs. और ऑथर को तब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आती जब तक वो फाइनली स्कूल में ये सब चीज़ें नहीं पढ़ती. वो एक प्रॉपर जो लाइफ साइकिल होती है फ्रॉग की, जब तक वो नहीं पढ़ती उसको ये समझ में नहीं आता कि वो एग्स कैसे डिसअपियर होते हैं, फिर ये टैडपोल कहाँ से आ जाते हैं, उनकी टेल कहाँ चली जाती है. सो इट वाज ऑल काइंड ऑफ अ मिस्ट्री टू हर दैट हाउ कम all these things are happening, and she used to believe that it's some kind of a black magic. Okay, so in my mind's eye, or in her imagination,
I can picture the stream now. Even now, she can imagine and she can picture the stream, the crystal clear water washing over the pebbles. The water was so clean and so clear that you could see through it. The grains of soil underneath, okay, silky and slow moving. मतलब वो पानी इतना साफ होता है कि उसके नीचे जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, पेबल्स होते हैं, वो भी क्लियरली विजिबल होते हैं, और जो सॉइल होती है दैट वाज आल्सो क्लियरली विजिबल, एंड द वाटर वाज सिल्की एंड स्लो मूविंग. ओके, I can see the life in that water and in the plants along the banks as the current of the water sidles around them. और जो देखो लाइफ को हम कैसे जज करते हैं, इफ़ देर इज़ मूवमेंट, देर इज़ एनर्जी, ओके, देन वी से दैट इट हैज़ गॉट लाइफ. ओके, और जो चीज़ स्टैटिक होती है, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, जो जिसमें कोई एनर्जी नहीं होती, या जो चीज़ किसी के पहली चीज़ तो हम कैसे लाइफ को करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, मूवमेंट, राइट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन. These are the parameters on which we judge whether a thing is life, full of life or lifeless, right? So उसको लगता था जो water है, जो stream का water है, it has got life in it because it is flowing. It is not static. It is not it is not stagnant. It's not stopped at one place. So it is moving on, so it has got life. And in the plants along the banks, और जो उसके नदी के किनारे जितने भी पेड़ पौधे थे उनमें भी लाइफ थी. And as the current of the water sidles around them, moves slowly and quietly, not wanting to be noticed. और पानी उनके पास से बिल्कुल चुपचाप, बिना अपने आप को नोटिस कराए हुए बह रहा था. When my mother would send me to fetch water, I would get lost in this fascinating world until she would call out, "What are you doing under the arrow roots? Bring the water." और जब भी उसकी मदर उसको पानी लाने के लिए भेजती थी नदी में से, तो वो उसी फैसिनेटिंग वर्ल्ड में खो जाती थी. She used to imagine that there is so much life in that stream, in all the plants along the banks of that stream. Okay, and then she would get fascinated with the eggs and the tadpoles and the frogs there. So there were so many kind of life forms that used to fascinate her. Then suddenly she would get interrupted by her mother's voice, and she would used to question her that, "What are you doing under the arrow roots? Bring the water." I later learned that there was a connection between the fig tree's root system and the underground reserves of water. Okay, now when the author started to go to school, she came to know that there was a connection between the fig tree's root, जो fig tree थी उसका जो root system होता है, और जो underground reserves of water हैं उसमें connection होता है. The roots sank deep into the ground, breaking through the rocks beneath the surface soil. जो उसकी roots होती हैं वो काफ़ी deep तक जाती हैं. They are deep rooted. Okay, and they break through the rocks. जो सरफेस सॉइल के नीचे जो लेयर होती है, रॉकी लेयर, उसके भी अंदर जाते हैं वो. द रूट्स एक्सटेंडेड अंटिल दे टच द अंडरग्राउंड वाटर टेबल. ओके, मे बी आपने ये सब पढ़ा होगा, द वाटर टेबल एंड द लेयर्स ऑफ सॉइल एंड एवरीथिंग इन साइंस, so you must be knowing. If not, just go through that again. So the water travelled up along the roots until it hit a weak place in the ground and gushed out as a spring. अब जो वाटर है उसको बाहर निकलने का एक सोर्स मिल जाता है उन रूट्स के थ्रू. ओके, तो एकदम जैसे फाउंटेन की तरह वो वाटर वहाँ से जो अंडरग्राउंड वाटर है, इट कम्स अप along the roots just like a sort of a fountain. Indeed, wherever these trees stood, there were likely to be streams. और जहाँ पर भी ये जो trees हैं, fig trees हैं, वो होती हैं, उसके आसपास नदी या waterfall इस टाइप से कुछ ना कुछ source of water ज़रूर होता है. The reverence the community had for the fig tree helped preserve the stream and the tadpoles. So the kind of respect that the community
had for the fig tree helped into preserving the stream and the tadpoles. Okay, ना तो वो फिग ट्री को काटते थे, ना उसकी लकड़ी को जलाते थे, और उसके जो अंडरनीथ वो होती थी ग्रोथ जो भी होती थी, छोटे छोटे प्लांट्स उसके नीचे जो भी उगते थे, उनको भी टच नहीं किया जाता था. सो इन अ सेंस दे वर प्रिजर्विंग द स्ट्रीम एंड द लाइफ फॉर्म्स that used to live upon them. The trees also held the soil together, reducing erosion and landslides. अब आपको ये भी पता है कि जो ट्रीज़ होती हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं. ओके, दैट्स वाई सॉइल इरोजन नहीं हो पाती, ना ही लैंडस्लाइड्स हो पाती हैं. और जहाँ पे पेड़ों को काट दिया जाता है, जहाँ पे डिफॉरेस्ट्रेशन होता है, वहाँ पे सॉइल इरोजन और लैंडस्लाइड के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सॉइल जो है वो लूज़ हो जाती है. So in such ways, without a conscious effort, these cultural and spiritual practices conserved the earth's biodiversity. So मतलब जो वहाँ की कम्युनिटी थी वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही थी, बट उनका कुछ ऐसे कस्टम्स थे, कुछ ऐसे ट्रेडिशंस थे विच दे वर फॉलोइंग एंड विच वर एक्चुअली गुड, विच वॉज कंजर्विंग द अर्थ's biodiversity. Biodiversity means the variety of plants and animals in that place. Okay, so they were actually, through these customs and traditions, they were conserving the earth's biodiversity. So that was a really good thing. So I hope you have understood this chapter. Okay, so now you have to write all the difficult words and all the word meaning in your fair notebook. Okay, and the question answers will be taking up in the next class. Thank you for watching this video.